As we have practiced about present indefinite tense, present continuous tense and present perfect tense in last videos for active passive, so here now we will do some exercise. I will do for you some examples and you have to keep trying along with me, and please try to write it down. She is teaching us. We are being taught by her. We के साथ और यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में being का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में by, फिर ऑब्जेक्ट. सो शी इज टीचिंग अस, वी आर बीइंग taught by her. नेक्स्ट, we are doing nothing. Nothing is being done by us. They are repairing the road. The road is being repaired by them. The road ऑब्जेक्ट था इसलिए पहले सब्जेक्ट बन गया है, उसके अकॉर्डिंग इज आ रहे हैं, फिर उसके बाद बी, फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी, हमने किया रिपेयर्ड, एंड आफ्टर दैट बाई के साथ दे का थर्ड फॉर्म पैसिव में देम होता है. सो द सेंटेंस इज दे आर repairing the road is being repaired by them. Next, Mohan is helping her. She is being helped by Mohan. I am learning it. It is learning by me. Next, he has eaten a mango. ये प्रेजेंट परफेक्ट से है. प्रेजेंट परफेक्ट का रूल मैंने बताया है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द रूल बुक द आंसर विल बी अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय, ही का हिम कर देंगे. ही हैज ईटन ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय हिम. नेक्स्ट, आई हैव किल्ड 2 birds. 2 birds have been killed by me. Thank you.